So, I welcome all of you and let's start the class. I hope you all have a bit of idea about the numerology is all about the numbers. And यहाँ पे सबसे important क्या है? What are the important things about number is कि जो आपका date of birth है, your date of birth and your destiny number, you must have heard about the basic number and the destiny number, right? On the basis of your basic and destiny number, we understand the different traits, the personality, the things we will have in life. हमारी life में हमें क्या obstructions हैं, क्या problems हैं, what I will face in my life. लाइफ में मुझे क्या सेटबैक्स मिले, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस थे मेरी लाइफ में, मेरी एजुकेशन कैसी है, मेरे रिलेशनशिप कैसे हैं, आई विल हैव अ लव मैरिज, अ नॉर्मल मैरिज, अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर आई विल फेस अ रिलेशनशिप इश्यूज, or I have faced a lot of struggle in my life. That all we can easily understand with the help of numbers. Astrology you can learn within 35 to 40 classes max to max, right? So, but astrology takes more than this. You need to practice a lot, but with the help of numbers, numerology, you can easily predict a lot of things about anyone. Let's start. Please keep a pen and paper with you so that you can, note down the things that will be easy for you. Let's start about if your basic number. What's your basic number is? हमारा basic number आपने कई लोगों को सुना होगा, कुछ लोग अरविंद सूद को भी follow करते हैं. We usually use this term driver and conductor number, right? But this is your personality number, what personality you own, the impact of the planet on you. किस planet का impact है, influence है on your life, and what planets traits are. On planets के trait क्या है? What are the traits of that particular planets in your life? So you will understand a lot of things about the basic number, the driver or the personality number, what exactly this basic number tells about you. Would you like to share? You can share your date of birth in the chat box so that we can understand how to calculate the basic number and क्या personality traits होते हैं उन numbers की, how to calculate it as well. So you can share your date of birth. Gunjan is 8. Again, I have iPhone 17. Anyone else? Ma'am, there is some problem in my this one. I'm not able to text it. Can I tell the number of mine? Yes, sure. Yeah. Yeah, mine is 16776, ma'am. 16. Yeah, 16776, 1976. 76. So you have 777 in the grid. Yeah. All right. The bridge is number 3. And again, we have RT number 3. So we have lot of teachers today. And the spiritual people as well. Number 7 is a very spiritual number. Anyone else? Okay. Let's start how to calculate your basic number. How to calculate your basic number. तो basic number आपको कैसे calculate करना है? There in that case, you need to only focus on your date. On your date. Like in case of Gunjan, it's 8. In case of, please mention your name as well. It doesn't look nice when I call iPhone. So it's 17 and it's 16. Bridge is 3 and Aarti is 3. Sundri. Shukriya is iPhone. Okay. Shukriya Savant, I suppose. All right. Now, what we need to do for a basic number, for Gunjan, it's 8, right? And for Shukriya,
व्हाट वी नीड टू डू, हमें ऐड करना है 1 + 7। इट मीन्स माई बेसिक नंबर, द नंबर ऑफ शुक्रिया इज 8, राइट? फॉर सुंदरी the basic is 1 + 6 is equals to 7. Are you all able to see my screen? Please write in the chat box or show me the thumbs up if you are all are able to see the screen, because I'm writing on the screen so that you can understand. Great. Okay. Okay. Right. So 1 + 6 is 7. In case of bridge, in case of Aarti, the basic number will be 3 only. So where we have to focus to understand or to know or to calculate your basic number is your date only, date of birth, not complete date of birth, only your date, right? It means Gunjan is number 8. She has the influence of Saturn. Shukra is also number 8. She has the influence of again Saturn. 16 Sundari is has the influence of Ketu because she is 16. 1 + 6 is 7. Bridge is under the influence of number 3, that's Jupiter. Aarti also number 3. So you all have the influence. Today we have double 3 and 2, double 8 and 7, right? And which number supports the occult? Which number supports the occult? If you have 7, either your basic or destiny, that supports occult sciences. If you have 3 as your basic and destiny, that also support occult sciences. If you have number 5, that's Mercury, as your basic and destiny, that also supports occult sciences. Apart from this, Rahu's number, that is number 4, also supports occult sciences. इसका मतलब ये है कि right now there are the high chances कि आप सभी लोग either आपका बेसिक और डेस्टिनी ये नंबर्स के कॉम्बिनेशन है. कौन कौन से नंबर्स हैं? That is 3, 5, 4 and 7. इन नंबर्स का यानी इन प्लैनेट्स का या तो फिर जुपिटर का, आइदर मरकुरी और राहु और केतु, यू मस्ट हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज प्लैनेट ऑन योर लाइफ राइट नाउ, जिससे आप इस फील्ड में इस तरफ आपका इंटरेस्ट आया और आप यू वांट टू लर्न, यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस नंबर सिस्टम. तो आप नेक्स्ट क्लास में सब चेक करके आइएगा, आर यू whether there is the influence of these numbers, these planets on your life or not. So now understand कि basic number हमें बताता क्या है हमारे life के बारे में. This is the number. If it is possible for you all to switch on the cameras, that will be good enough. नंबर, बेसिक नंबर हमें क्या बताता है हमारे लाइफ के बारे में? बेसिक नंबर हमें बताता है कि व्हाट आर योर इनबॉर्न टैलेंट्स, आपका टैलेंट क्या है, आप में क्वालिटीज क्या है, हाउ वी लुक एट आवरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं. एवरीवन हैज अ परसेप्शन, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, isn't it? We all have some perception about ourselves. We know our qualities कि मेरे पास ये, I have very good administrative skills, I know where to invest, I can manage money very well, right? I am a very good researcher. मुझे छोटा सा concept दो, I can do anything on that. I can give you the maximum, content on that, isn't it? हम सबका अपने बारे में होता है ना, कोई बोलता है मैं मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है, और किसी के बारे में हम क्या बात करते हैं कि अपने ही बारे में हम अलग अलग चीजें, हमारे परसेप्शंस होते हैं. सो दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट ऑन अस. ये कहाँ से आती हैं ये क्वालिटीज? ये क्वालिटीज आती हैं हमारे प्लैनेट से. हमारा दिस मच इज क्लियर कि कैसे बेसिक जो नंबर है और द ड्राइवर नंबर और द पर्सनालिटी नंबर इन्फ्लुएंस अस, दैट गिव्स अस आवर इनबॉर्न टैलेंट्स एंड क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल, Gunjan is number 8, right? Am I right, Gunjan? Number 8. So you have the high skill of administration. You know how to manage things. You are like a workaholic. घर पे भी बैठे हो तो आराम से खाली नहीं बैठना, हमें ना काम करना है, कुछ ना कुछ करते रहो तब तो ठीक है, अदरवाइज आई फील वेरी बैड.
पता नहीं क्या करना है लाइफ में, क्या ही हो रहा है, कहाँ ही जाऊं, क्या ही करूं, something like that happened. Those who are number 8, they are like workaholic. And someone else was 17, they are also workaholic, but they are the combination of 1 and 7, right? So 1 7 will have the influence of some number 1 and number 7 Ketu as well. क्योंकि 1 and 7 मिलकर के 8 बना है ना, तो दे विल ऑल्सो हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 सन का और केतु का, दोनों का इन्फ्लुएंस भी होगा। तो 8 में दोज 17 से नंबर 8 बने हैं, उनके अंदर इन प्लैनेट्स के भी इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? ये क्लियर है? दिस बेसिक नंबर इज क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर को हम कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, राइट? तो इससे हम समझते क्या है, डेस्टिनी कहाँ से आया है? डेस्टिनेशन से। तो डेस्टिनी मीन्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वेयर वी वांट टू रीच, पहुंचना क्या है, हमें हमारी लाइफ में करना क्या है, राइट? व्हाट वी आर सपोज टू डू इन आवर लाइफ। हमारे लोग हमें हमारी तरफ कैसे देखते हैं, हाउ अदर्स लुक एट अस, व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट अस। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई हैव वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, बट अदर्स में थिंक दैट ही हैज लॉट ऑफ एटीट्यूड, बहुत भाव खाता है अपने नॉलेज का, राइट? ये तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, वेदर आई एम हेल्पफुल और नॉट, पर लोगों का परसेप्शन है मैं तो आई एम दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल, राइट? सो थिंकिंग डिफरेंट होती है या नहीं होती है? What we think about ourselves and what others think about ourselves. So our basic number is what we think about ourselves, and our destiny number is what others thinks about us. First thing. Second, what destiny has planned for us, right? Third is which path we have to take to reach our destination. अब हम एक हमारा एक डेस्टिनेशन हम लोग तय करते हैं कि आपको पुरी जाना है, वी नीड टू गो टू द बॉम्बे, राइट? या हमें कुछ विजिट करना है, कोई प्लेस विजिट करना है, सो व्हाट वी डू, विल सर्च फॉर ऑल द ऑप्शन, वेदर वी शुड टेक अ फ्लाइट, वी शुड टेक अ ट्रेन, और वी शुड गो बाय अ बस, और वी कैन गो बाय अ कार, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? So how we are going to reach to our destination? This is all about our destiny, the opportunities we have, the challenges we will face, that we all understand with the help of our destiny number. अब जब भी आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो आपका लाइफ कैसे स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स विद द पैकिंग. We'll start do the packing, we'll do reach to the particular place, where then we'll take a flight, right? अब कभी कभी होता है कि आप एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया, एंड देन यू आर इन अ हैसल कि भाई कैसे पहुंचेंगे, फ्लाइट ना छूट जाए। दिस इज द चैलेंज यू फेस आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। दिस इज व्हाट आवर डेस्टिनी नंबर एक्सप्लेन्स अस, कि क्या चैलेंजेस हैं और कौन सा पाथ, कौन सा रूट लेकर वी कैन रीच टू आवर डेस्टिनेशन। क्लियर? इज दिस क्लियर हाउ टू आई मीन व्हाट डेस्टिनी नंबर इज ऑल अबाउट? यू कैन शो मी अ थम्स अप एज वेल। Ma'am, can you say me the second point? First, you said what others think about us. Second one राइट, is what is that, ma'am? Second one दैट is इज व्हाट डेस्टिनी हैज प्लान फॉर अस, राइट? एंड okay, पाथ वी विल टेक टू रीच आवर डेस्टिनेशन, yes, ma'am. द challenges or opportunities we will encounter. Yes. Thank you, ma'am. Like as I gave you the example, we have to reach to a particular destination, and we have planned that we'll go by flight, and to get a flight we need to reach to the airport first. अब airport from home to the airport we will take a conveyance. अब अगर रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाता है, तो that's a struggle that you have to overcome to reach the airport. So destiny number tells us about the challenges, the opportunities. First thing is opportunity. We got an opportunity, that we got a chance that we can visit a particular place or we can reach to a particular place. But challenge was
कि वो टायर पंचर हुआ एंड देन वी आर इनटू हेसल, वी आर फेसिंग थिंग्स, वी आर fear of like we can get delayed, we can miss the flight as well. These were the challenges of life. और ये हमारे लाइफ, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव, ये हमारे लाइफ में होता है. यू हैव ऑप्टेड फॉर अ न्यू जॉब, आपने जॉब प्लान किया लाइक आई विल ज्वाइन वेयर, यू गॉट अ जॉब एज वेल, बट नाउ व्हाट यू हैव टू प्लान फॉर, लाइक इफ यू आर अ mother as well, then the challenges is like how you will take care of your kids, how will prepare their lunch, and when how will you reach to your office on place, how will you manage the your colleagues, and how you will balance everything in your life. This is the challenge. Got it? Now, how to calculate your destiny number? The second thing is how to calculate your destiny number. So for destiny number, what we can do, like, do share your date of birth, complete date of birth. You can tell me as well. You can unmute yourself and you can tell me. 16/7/76, ma'am. 16, 7 7, 19, 7. 1976. Okay. How to calculate? So 16, 7, 19, 76. Right? Now we have to add 1 plus 6 plus 7 plus 1 plus 9 again 7 and plus 6. Right? We need to add all the digits here. 1, 6, 7, 1, 9, 7, and 6. We need to add all the digits. It means 1 plus 6, 7, again 7, 70, 6, 23. 30 plus 7 means 37. It means basic is 1 and basic is, sorry, 7 and destiny is 1. Right? Got it? मैम मेरा ये डेस्टिनी नंबर भी सेम है, 3 आया है, सेम है अच्छा, मेरा डेस्टिनी नंबर। बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों सेम है आपका. जी मैम। ठीक है. अभी ये भी समझेंगे कि बेसिक और डेस्टिनी सेम होता है, तो मतलब जो हम हमारे बारे में सोचते हैं वही बाकी लोग भी हमारे बारे में सोचते हैं. ओके। राइट? वही लोग हमारे बारे में सोचते हैं और फिर हमारे माइंड में सेट होता है, क्लियर विजन होता है कि भाई मैं, ये मेरे पर्सनल ट्रेट्स हैं और मेरी डेस्टिनी भी मुझे यही बता रही है कि आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, मुझे इसी फील्ड में जाना है. आई नीड टू काउंसिल पीपल, आई नीड टू गाइड पीपल. So, राइट? ma'am, my destiny number is 3. Gunjan, ओके. 3. योर 8 and 3 combination. योर 8, 9, 1984. 8, 9, 1984. Right? So we need to add 8. It's 9 and 8, 17 plus 18 plus 22. So we will add 17 plus 22. Then again we'll add 3 plus 9. It's 12 and it's 3. It means your basic is 8 and destiny is 3. What do you do, Gunjan? I work in sales advisor. Sales advisor, right? But have you ever feel like कि ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है, आई शुड शिफ्ट टू समवेयर एल्स, कुछ और करना चाहिए, कर तो रही हूँ बट सेटिस्फेक्शन इज स्टिल मिसिंग. Yes, because people are doing very good, and sometimes, I'm more hardworking, but yes, people are doing very good बिकॉज sales. सेल्स इज, बिकॉज नंबर 8 ना सेल्स नहीं कर पाता. नंबर 8 इज नॉट फॉर अ सेल्स पीपल.
This is good for number 5, for number 6. This is good. But for number 8, आप अगर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस हो उनके पास, तो दे कैन डू वंडर्स इन दैट. एंड यू हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन 8 and 3. अगर आपने लॉ किया होता तो यू कैन बी डूइंग समथिंग लाइक which you cannot feel like I can do something like that, like labor law, anything related to law. वो आपके लिए एक wonderful options and opportunities that can be. But yes, after a age, we cannot think about कि चलो अभी हम law करेंगे and that we need to spend 4-5 years to learn law. But 8 and 3 is also a combination, a good combination to be an astrologer and a numerologist, right? 8-3 doesn't support too much about tarot reading and all that, but 8 and 3 is a good combination for astrology, numerology, and vastu. So these people can go ahead for these fields of occult, not tarot. I won't suggest you go for tarot. Tarot is easy to learn, but for a 8-3 combination, they are very hardworking. They want to learn things. They need meaning into that. They want to understand the meaning. So for you, tarot is not the option. Other the any three modalities, you can go ahead with that. Right? Okay. Anyone else who has shared their combination? Ma'am, what is for me, ma'am? 7-1. 1 and 7. You ever did a government job or something like that? You planned for government job? I was planning, but I didn't go, ma'am. I didn't go for that. All right. The government job was good enough for you, but no, it's not the age. But yes, you must go. Being 7, as your destiny is 7, no? Sorry, basic is 7. So 7 is a very good number, a very supportive number for occult. Anything in occult, either it's tarot, because tarot is a very intuitive, field, and number 7 people are highly intuitive. They are highly intuitive, and my suggestion to number 7 is always never say anything bad about yourself or about others. They are highly intuitive people. अगर आप अनजाने में if you say something about someone that happened, वो हो जाता है. So for number 7, if they want to enhance their luck, always talk positive about yourself. Like, I can do this, I can achieve this, I will have this, whether it's a asset, whether it's a property, whether it's a money, anything, a profession as well, or success in your life. You will have everything if you'll speak positive words about yours. They are highly intuitive. And for number 7, numerology and your tarot, you can go ahead with that as right. Yes, मैम Bridget, 3 नंबर, मैम हाँ 3 नंबर में किसको क्या करना चाहिए मैम? जैसे मेरा 3 आप है दोनों ही आप नंबर तो तो। ऑलरेडी टीचिंग में है ना आरती जी? नहीं मैम, मैं अभी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन बेटे की वजह से मैं छोड़ दी थी मैंने टीचिंग। अच्छा, टीचिंग आपने छोड़ दी थी, तो नंबर 3 के लिए काउंसलिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन. दे कैन काउंसिल, लाइक आप जैसे वास्तु एक फील्ड है या एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है दैट वेयर वी काउंसिल पीपल अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव इन देयर लाइफ, एंड वी आर हियर टू गिव द सॉल्यूशन. तो काउंसलिंग इज अ बेस्ट थिंग फॉर नंबर 3. यस ब्रिजी. Ma'am, my basic is 3 and destiny is 1. 3 Is and it 1, good? okay. Yes, it's a one of the good combination, and it's a combination which says the person can be a doctor, a leader, or a judge as well, and they can be into the occult fields, a very good astrologers, Okay. right? Yeah. Thank you. आप क्या आपने कुछ किया था इस फील्ड में रिलेटेड टू दैट? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया था। ओके. मैंने बोला ना, मैं ट्यूशंस में इतनी बिजी होती थी कि कुछ नहीं कर पाई, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने जैसे मनी रेकी सीखा, थोड़ा सा मैंने ब्राउजर सीखा, बट उसको मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी चेक मैं करेंगे हम लोग आप लोगों का विल प्रैक्टिस ऑन योर चार्ट एज वेल व्हाट्स द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द रेमेडीज एज वेल, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप काफी कुछ अभी लर्न करेंगे. ओके मैम. You will learn a lot of things. So basic and destiny is clear to everyone.
But basic Yes. is all about, and the destiny is all about what we can understand with the help of our basic number and what we can judge with the help of our destiny number. Right? So let's Ma'am, move forward. excuse me, ma'am. Apart from tarot, any other things I can pursue, ma'am, actually? Yes, numerology as well. I mean, Acha, apart from occult, yeah. or like apart from tarot, because You occult said has tarot like and astrology. ah, Occult is all about astrology. Occult is all about Vastu Shastra. Occult is all about numerology, tarot reading, Reiki healing, meditation. These all the part of occult. So whatever you feel is, most appropriate for you, you can go ahead with that. But tarot is a highly intuitive field as well as numerology as well. So you can go ahead with that. And these are easy to do things initially. Astrology and Vastu Shastra take a lot of time to complete. For astrology, at least you need to spend a year of learning. Minimum, this is minimum. And yeah. for Vastu Shastra as well, at least you need to learn 4 to 5 or 6 months of course. And then you need to learn a lot of things in Vastu Shastra because there are devs, devtas, and position and different kind of remedies and a lot of things we have to learn in Vastu Shastra. So numerology and tarot are easy to learn. You can complete that in around 35 to 40 classes, right? And you can practice just within a month. You Okay. can start practicing, you can start earning within 3 4 months. But if you are doing astrology and Vastu Shastra, it takes years to give the right predictions. Okay. So that is why जो भी ऑक्टेट के फील्ड में आना चाहते हैं, आई डू सजेस्ट देम कि इस एज में आने के बाद ना आवर फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट कि हाउ टू अर्न मनी, राइट? बिकॉज वी वांट टू मेक आवर लाइफ स्टेबल. And these days we have very good options, as we have astrotalk, we have astrosage, we have bodhi and other apps, where after completing this numerology and tarot we can get ourselves enrolled, we can guide people, we need not to run for the clients, right? They provide you the clients, you give them the guidance and you get your money. And initially, while spending 4 to 5 hours in a day, you can minimum you can earn 15 to 25K with only spending 4 to 5 hours. But if you give more time, you can earn in 50,000 or more than that, even in lakhs. You people earn in lakhs. But initially, as you understand, like if you are a beginner, so they will pay you like 10 rupees a minute or 12 rupees a minute. But later on, with the experience, you will definitely get 20 rupees, 21 rupees, or something like that, and then your income will increase. But initially, with a low per minute rate, even you can earn 15 to 25K. That depends on the time you spend on the app, right? तो आपको अपने आप को establish करने के लिए you need not to run कि मेरे पास client आ जाएगा and I need to promote on Facebook or other apps, or I need to spend money. You can start earning and then you can spend money, right? Actually, I do play Veena also, ma'am, actually. So, Okay. is it, can I take classes for Veena? Yes, Is it yes, free? definitely you can. Okay, thank you. Because playing instruments is somewhere connected to your soul. And this number 7 is all about soul. So anything which you feel get connected to your soul, you can go ahead with that profession. Right now, next is note down the planets and the numbers. Planets and number. Please prepare the notes. It will help you to understand a lot of things about you, yourself, and your family members. One is sun. Number 2 is moon. Number 3 is Jupiter. Number 4, it's Rahu. Number 5, it's Mercury. Number 6, Venus.
Number 7 is Ketu. Number 8, Saturn. Number 9, it's Mars. So when I say like you have the influence of Mars, it should be there in your mind, like I'm talking about number 9. Or if I say it's number 9, you have the influence of number 9, it should be there in your mind that I'm talking about planet Mars, right? तो अगर आप planets के साथ resonate कर रहे हैं, you will be able to understand the traits of that particular planet, right? Now let's talk about the planets and their traits. जो हम बात कर रहे हैं ना कि बेसिक पर्सनालिटी हमारी कैसी होगी, हम किस तरीके से हाउ विल वर्क आउट, हाउ वी विल अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. लाइक आई एम नंबर 1, से माय बेसिक इज नंबर 1, राइट? सो आई हैव अ सन इज व्हाट? सन इज द Fire. फायर प्लस अ प्रत्यक्ष देव, विजिबल देव ऑन अर्थ, राइट? सो प्रत्यक्ष देव है और उनके अंदर क्या है? आगे बढ़ने की क्वालिटी है, पंक्चुअलिटी है, कंसिस्टेंसी है, right? So we can see all those quality, we can resonate the qualities, these qualities with the sun. With fire, we can resonate with the aggression, right? And this sun, those who are born on 1st, 10th, 19th, and 28th of any month. 28th of any month. These people are ruled by number 1, right? And they are like this, also called as king in the number system. King in the number system. Plus, it also resonates with your father or a father figure. They are highly independent, confident, and born leader. When we talk about sun, we talk about the name, fame, and recognition. ऐसा आपने, if you have heard that term, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा, राइट? क्योंकि सूरज कितना अच्छे से चमकता है एवरी मॉर्निंग एंड गिव लाइट टू एवरीवन. So with that term we can understand that gives us name, fame, and recognition in our life. They are highly authoritative and energetic. So energy तो हम we can resonate with sun, the energy, and we can resonate with sun, right? And they are bit dominating in nature. तो हमारे पास आज कोई क्लास में नंबर 1 तो नहीं है, बट आपके आसपास एनीवन हु इज नंबर 1? कोई है जो नंबर 1 है? Ma'am, does this go along with the destiny number also? Like this one? But the use of destiny number is bit different. Acha. Like these are the basic qualities, these are my personality, right? And the destiny number is what? Destiny number is 1 was my destiny, and the basic number was 7. 7, right? So 1, what does 1 means? Destiny number means how people look at you. Means you are a spiritual person, but people feel you are very dominating. You have the leadership quality. You are very confident. You look for the name, fame, and recognition in your life. Very energetic person. But you yourself feel I am a very spiritual person. I'm a very down to earth person. I'm very emotional in nature. I'm always ready to help. But others are thinking that I am a dominating person. You got the difference, right? First thing. Second is, like if my destiny is 1, it means my life, my destiny is that I have to lead whatever I am doing. I have to be on the top position. I need to behave like a king.
इट डजंट मीन दैट कि अब आपको लीडर ही बनना है, अब आपको यू हैव टू बी ऑन द हाईएस्ट प्लेस. दैट डिपेंड्स ऑन अस, वेयर वी स्टैंड, what we are doing in that. For example, you are living in a society or somewhere. In society there must be 100 200 people. Maybe my area is that only, so I can lead in that particular area, right? But if I am a social worker, so thousands of people knows me. So in that case, if I am, my destiny is one, I need to lead that much of circle, right? So I should know how to lead in, where to lead. I should have that leading, leadership qualities. I need to be energetic. I have to be with full of confidence, because being number one, destiny one, I have to be in a position where I can lead. Leader means guiding force. कि मैं कैसे औरों के लिए भी गाइडिंग फोर्स बन रहा हूँ. लीडर क्या होता है बेसिकली, व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो एक एक पोजीशन पे है और एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? इजंट इट? लीडर वही तो होता है कि अगर आज मोदी जी ने कुछ बोला तो वी आर रेडी टू डू दैट व्हाट ही हैज आस्क्ड अस. जब कोविड टाइम था, व्हेन ही आस्क्ड दैट एवरीवन हैज टू ब्लो अ काउच, और बर्तन बजाना है और सब कुछ कुछ करना है, so everyone was doing that at the time of COVID, isn't it? It means the people follows you. People आपके बात सुनते हैं. Got it? So आपको क्या करना? You have to do this. You need to lead. You need to be a guiding force. आपको लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है. Got it? Bridgie, got it? Gunjan, clear? Navneet, clear? Aarti ji, clear? Yes, You can ma'am. Okay, great. You can show me, either you can show me a thumbs up as well. Or if you have any confusion, any question, any query, because ये आपका एक proper class हो रहा है, so you can ask. Right? It's not like a webinar कि मैंने आपको एक input दे दिया and you'll go back. This is like a class. And how this way I take a class, जो भी आपके advanced course होते हैं, same way में आपके classes भी होते हैं. राइट? सो इट्स अ प्रॉपर क्लास. और मैं बीच में अगर क्वेश्चन पूछूंगी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव मी द आंसर, देन आई कैन गेट एंग्री एज वेल, राइट? सो यू नीड टू आंसर, बी अटेंटिव. फ्री नेवर मीन्स लाइक कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? This is clear. Number one is clear to everyone, how to use it and what qualities we have. Okay, now we can move forward to number two. तो आपके लाइफ में है कोई नंबर वन, दो यू नो नंबर वन इज, एंड डज दे हैव दीज क्वालिटीज? कोई है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर टू, दैट्स क्वीन. दोज हु आर born on 2nd, 11th and 20th, 29th of any month, they are ruled by moon. In number system, number two is called as queen as well as mother. Now, क्वीन की पर्सनालिटी कैसी होती है? फर्स्ट पर्सनालिटी ऑफ द क्वीन, एक मदर की बात हो रही है, क्वीन की बात हो रही है, तो शी हैज अ मदरली फीलिंग, शी हैव ऑल द लव, अफेक्शन एंड इमोशन, राइट? एंड मून क्या है? जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मून मन का कारक है, राइट? इट्स रेजोनेट विद आवर इमोशंस. तो मून कैसे स्विंग, मून के फेजेस होते हैं ना, फुल मून फेज, डार्क नाइट, राइट? कभी कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, इजंट इट? तो ऐसे ही नंबर टू के इमोशंस भी होते हैं. एट टाइम्स यू विल फाइंड देम वेरी हैप्पी, वेरी इमोशनल, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू,
बट जब हाई ऑन इमोशंस हो जाते हैं तो दे फील एट टाइम्स इनसिक्योर, एंजाइटी फीलिंग होती है, एंड दे कैन गेट डिप्रेस एज वेल. They are very caring and they behave like a healer. Very caring and behave like a healer. They give so much of love and affection and care to everyone. Like sometimes people get, you know, what I say, you know, परेशान हो जाते हैं उनकी ओवर केयर से कि आप इतना वाई यू आर सो मच ऑफ वाई यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट मी, लीव मी. एंड दीज थिंग्स हर्ट दीज पीपल. They feel like, so I am too concerned about you, I'm caring about you, I'm thinking whether you had your food, whether you did not get hurt with someone or whatever it is. They are ready to listen. They are very good friends. They are always ready to listen to you. कुछ लोग होते हैं, रोना रोने का मन कर रहा है तो नंबर 2 इज द नंबर who can give you the shoulder. Okay, you can cry on my shoulder. I'm here to listen. I'm here to heal. These are the that kind of person. Like whatever problem we face. सबसे पहले अगर कोई भी चोट लगती है ना आपको, what we say, माँ. सबसे पहले what we say, माँ. मुंह से माँ ही निकलता है. तो these number 2 people are like that. They have that kind of emotions towards you. अब माँ फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट नाइट तक वो आपके पीछे पड़ी रहेंगी. खाना खा लिया, बैग लगा लो, गेट रेडी फॉर द स्कूल, डू दिस डू दैट. दे आर सो कंसर्न. एंड हमें ये मदर का तो इमोशन समझ में आता है, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इमोशन ऑफ अदर्स. इन दैट केस व्हाट वी फील कि आप मुझे, यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट मी एंड माई इमोशंस. एंड दिस इज व्हाट नंबर 2 को बुरा लगता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नंबर 2 क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? इमोशन से जोड़ेंगे नंबर 2 को, मदर से जोड़ेंगे. जैसा मदर होती है ना, वी ऑल आर मदर हियर, सो वी कैन रेजोनेट विद दैट. नंबर 2 पीपल आर लाइक दैट. ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 3. अच्छा, आप नंबर 1 में एक चीज मिस हो गया, नोट डाउन 1 पे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, नंबर 1 है आपका, देन चेक योर ईस्ट डायरेक्शन. चेक योर ईस्ट डायरेक्शन. अपना नंबर 1 का एनर्जी इफ यू वांट इन योर लाइफ, then check your east direction. If you want a good energy of number 2 in your life, then check the northwest direction of your house. ठीक है, northwest direction of your house. Then next is, Excuse me, ma'am. What is yes, the benefit of that if we check the directions? for example, you don't have number 2, right? So those who don't have number 2, we call them a cold natured people because they miss emotions, right? So if we check now northwest, and we can place a crescent moon in that particular direction so that we can get the energy of 2 as well. We can balance that energy. That this is a part of remedy as well. So we can get the energy of that particular direction. Say I do have number 2, but my number 2 is repeatedly there in the grid, like 2 times or 3 times. It means either I am a over emotional person, I can face the anxiety, I can face the depression as well. So if I check a northwest direction and if there is a Vastu dosh, then this problem can be more, because northwest direction, the ruling planet is moon. For east direction, the ruling planet is sun. So that works as an remedy as well. If our east direction is perfectly all right, then we'll have a good social connection. We will have name, fame, and recognition in our life. If even we don't have number 1 in the grid. Got it?
So what we have to do, we need to check a particular direction. If there is any kind of a dosh, then we try to remove it, so that we can get the good energy of planet from home as well. Because being a homemaker, we spend our 90% of time at home, right? So we are the person who mostly get the full energy of all the planets in our house. Because हमारे बच्चे भी, they go for school, our husbands, they go for the offices and all. So वो spend करते हैं अगर 12 hours, so we spend 24 hours at home. So we are the person who get most affected with the impact of your planets. ऐसा नहीं है बाकी लोग इम्पैक्ट नहीं होता है, बट बिकॉज वी स्पेंड द मैक्सिमम टाइम, तो हमारे ऊपर बीइंग विमेन हम लोगों पे इम्पैक्ट काफी होता है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3. नंबर 3, यहाँ पे वी हैव मेंशन्ड गुरु. They are very good counselors. So today we have Aarti and one more person who is a teacher. Biraj, okay. So these are the people. They are the good counselor. They are the guru. So you can understand number 3 with the guru. जैसे गुरु होते हैं ना, they are like that. Number 3 are like that. They have high moral values. They are very religious. They have, all the moral values. They are very truthful. They are always ready to help and guide and counsel their students. They don't work on the short-term vision or short-term goals. They have long-term visions and long-term goals. They want to achieve that, right? They are the selfless people. Those who are always ready to, let the life of others give spark to them. Because हमारे life में क्या सबसे ज्यादा important है? That knowledge. And these are the people, those who impart the knowledge, right? तो अगर आपको नंबर 3 समझना है, जस्ट अंडरस्टैंड योर गुरुज, द व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे वर, and the moral values they have, the concern they have, how they counsel us, so we can understand the number 3 easily. So we have 2 gurus here, 2 counselors, that's Aarti and Viraj. So we can easily understand that. You can easily resonate with these qualities. Do you both resonate with these qualities? Yeah. मैम इसमें जो आपने क्वालिटीज दिए वो हैं, लेकिन इसमें आपने जो लास्ट की जो 2 बताई हैं कि दे आर डिसलॉयल एंड मैनिपुलेटिव, ये दोनों कहीं मैच नहीं हो रही हैं. उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी. अभी हम आगे ना विल लर्न हाउ टू क्रिएट द ग्रिड. जैसे इन एस्ट्रोलॉजी विल लर्न टू क्रिएट हॉरोस्कोप, राइट? इन न्यूमरोलॉजी वी प्रिपेयर अ न्यूमरोस्कोप. So अभी हम after completing the 5 numbers we'll learn how to prepare a numeroscope, right? In that you will understand कि ये जो manipulative और disloyal आया है ना, ये क्यों आया है. When there are the repeated numbers in your grid, that gives you these disqualities or bad qualities, right? If you have only 1 in your grid, then we have all the good qualities. But if it gets repeated in your chart, then we can see these qualities as well. We can be manipulative. Being manipulative is not bad. Disloyal is bad, but manipulation is not bad. At times we manipulate our students. At times we manipulate our students. You do this, you do that, then you will be able to achieve things. And I will give you a particular gift. I'm manipulating them. I'm manipulating their thoughts. But my end motive is their good. So the end motive of a guru is that only, right? But when it gets repeated, they can be disloyal as well, right? So for number 3, if we want to understand number 3, they are a very good counselor, they are very good teachers, and
We need to think about our gurus, what kind of a personality they were. Then we can easily understand number 4 in our life, right? And those who are born on 3rd, 12th, 21st, and 30th of any month, they are ruled by Jupiter. This is 21st, right? And for number 3, we need to check the northeast. And for the northeast direction, the best placement is your mandir. If you have your mandir in your northeast, then it will give you the best result. हमारे लाइफ में हमारे गुरु हम किसको मानते हैं? किसी ना किसी, we worship one or the other god, or we try to get the guidance from them only, right? तो हमारे गुरु का जो भगवान का प्लेसमेंट ना, पीपल गेट इजीली कंफ्यूज्ड, हम कहाँ रखें, कहाँ होना चाहिए, वेस्ट इज ओके, साउथ इज ओके, साउथ वेस्ट इज ओके, ये क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के माइंड में, राइट? आज आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि व्हाई वी शुड हैव आवर मंदिर ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन। अब जब आप वास्तु पुरुष को देखते हैं ना, तो वास्तु पुरुष का जो हेड होता है, दोज पीपल हु नो अबाउट अ वास्तु पुरुष डायरेक्शंस के बारे में, so the head of the vastu purush is in the northeast direction, in the northeast direction, and north and east is the shoulder of the vastu purush, and the south, the west and the southwest direction are the legs and the lower body, right? The legs and the lower body. So आप, you just think about yourself, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, to whom you just want to worship, उसको आप हम अपने सर पे या अपने कंधे पे बिठाते हैं, या हम उसको अपने पैरों पे रखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू वर्शिप दैट। सो द कॉन्सेप्ट इज कि जिसको आप वर्शिप कर रहे हो, जिससे यू आर गेटिंग द गाइडेंस, देयर प्लेसमेंट मस्ट बी इन द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ एंड द ईस्ट डायरेक्शन, द बेस्ट पोजिशन फॉर अ मंदिर टू प्लेस। क्योंकि हम अपने पैरों के जगह पे, हम अपने लोअर बॉडी या फिर हमारा जो डिस्पोजल जोन है, हम वहां पे नहीं रखेंगे ना, जिनको हम वर्शिप कर रहे हैं। गॉट इट? ये कुछ क्लैरिटी हुआ या कंफ्यूजन हो गया? I'll show you. लाइक एक मैं बहुत रफ सा आपको बता रही हूँ। ये अगर हमारा एक हाउस है, राइट, एंड इफ दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, if it is west, it's north and south, right? And this is the northeast direction. The southeast direction, southwest and the northwest direction. तो जो वास्तु पुरुष मंडल है, उसमें यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है, दिस इज द हेड, these are the shoulders, north and northeast, and then it's a low mid, the stomach part which comes in the center, and then this way is the lower body, and then here is the feet of that vastu purush. मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, drawing is not that good, just giving you an idea, right? So this is the head of the vastu purush, these are the shoulders and hands, this is the chest part, this is the center, the stomach, the brahmstan, or like we have nabhi, the navel, and these are the legs, right? This, right? So abhi if we ask कि where to place the mandir, तो हम कहाँ place करेंगे? Where we have the head, where we have the shoulders, or we will place it where we have the legs or the lower body, right? तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कहाँ रखना है मंदिर, वेयर आई हैव टू प्लेस द मंदिर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, राइट? सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेसमेंट, इज द डायरेक्शन ऑफ गुरु or Jupiter. So that is the best place to place a mandir, right? So we can, we need to check our northeast direction, and the best placement in that particular direction is your mandir to get the good, all the good vibes in your life of number 3. Okay. Now we have number 4. Then after number 5, we'll learn how to prepare the numeroscope. So कल का होमवर्क ये आप लोगों का, you all have to be ready with at least 2
numeroscopes. Excuse me, ma'am. Yes, Just a small doubt. Ma'am, this is only for the people for number 3 or what? Or it is a general thing that it's a mandir we have to general keep thing. it? Yes, It's a mandir general we thing. have to place in the northeast direction or the north direction or east direction. East direction. Yes. Matlab, the god should face in east direction, like that you're saying. No, Or no, no, we have no. to keep God should, it. yes, you have to keep it in the Keep it. northeast, north or east direction, and they should face the west, the south, or the southwest direction. Okay. Got it. Thank you. Okay, now the number 4, those who are born on 4th, 13th, 22nd, and 31st of any month are ruled by number 4, that's Rahu. Do you all know any story about Swarbhanu or Rahu and Ketu? Any idea? Any idea about Rahu and Ketu story? Anyone? They say it's a shadow, this one. It's a shadow planet. Yes, both 4 and 7 are both are shadow planet. Rahu and Ketu. See, we are like, Yes. this is the upper body, only head. The Rahu is only head, right? And number 7 is the lower body. You know, like this, below head. Okay. So number 4 is the head and 7 is the lower body. It means two part of one body. 4 and 7 is the two part of one body. And the story behind this number 4 and 7 is at the time of Samudra Manthan, the churning of the ocean. After churning, we got that Amrit. Amrit mila tha. And Lord Shri Hari Vishnu in Mohini avatar had to, distribute that Amrit to all the devs and demons. So he started with the, devs only, right? The Shri Hari Vishnu in Mohini avatar started with the devs only. And this Swarbhanu was very curious to have that Amrit, and he changed his, the attire or the face, or he's very mysterious planet. So he changed his, looks, and he went and sit in between the devs, right? That Swarbhanu sit in between the devs. But sun and moon recognize that this person is not a dev, he is the demon, and they told it to the Lord Vishnu. And Lord Vishnu, cut their throat. But until then, the Lord Vishnu himself has given that Amrit ki boonde to that demon. So it passed from the throat to the body. And when he cut him into the two parts, like the upper body and the lower body, the Amrit was there in it. So they never died. But what Sri Hari Vishnu did, they throw in into one into the north pole and second in the south pole. So they are into two bodies. The Swarbhanu then into a two bodies. One is called as Rahu and second is called as Ketu. So Rahu is the upper body like head and Ketu is the lower body. Got it? And as they had the Amrit, so they never died. But when Rahu and Ketu complained to the, Shri Hari Vishnu, what was our fault? आपको तो दोनों को देना ही था, देव एंड दानव, यू हैड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमृत टू बोथ ऑफ अस. लेकिन आपने ये सूर्य ने और केतु ने दे दिस चुगली किया है हमारा, तो आप उनको भी कुछ करो. तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी ये सूर्य और चंद्रमा विल गेट इन टच विथ राहु एंड केतु, इनको ग्रहण लगेगा, दे विल नॉट बी एबल टू गिव देयर एनर्जी. ग्रहण सुना है ना, यू हर्ड अबाउट सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स. सिर्फ सन को और मून को एक्लिप्स लगते हैं ना, बाकी किसी प्लैनेट को तो नहीं लगता. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स एंड राहु एंड केतु. गॉट इट? So as you have 1 and 7 combination, means Surya with Ketu, it means the Ketu is shadowing the sun. It means
You have ample of knowledge, information, qualities, but you are not able to show what you already have because of that influence of 1 and 7. You got it? You have 7 and 1 as combination. And why you must be feeling like I'm very knowledgeable. I have these many qualities, but even though I'm not that much successful, I have not achieved what I want to achieve. It is because of this. Because that Ketu has shadowed your qualities. That is why you are not able to achieve that success what you were, supposed to. So in that case, we need to do the remedies for that eclipse. This is called as Grahan Yoga as well. So is it clear to everyone this Swar, Bhanu, Surya and Moon and about the eclipse? Why this, eclipse is there only for the sun and moon? And the Mohini avatar of Shri Hari Vishnu, that is why we celebrate Mohini Ekadashi. Is this clear to everyone? Please show me a thumbs up or, you can unmute and you can tell me. Yes, ma'am. Great. So, now you understand that Damon was very intelligent and mysterious, right? One thing. With the story, you can easily understand that Damon was highly intelligent and mysterious in nature, and he knew how to change the appearance so that you are not able to understand them. So we can understand with that fact, we can understand that Rahu is a mysterious planet and very sharp-minded. Because it was the mind of Rahu only, na? The name of the demon before they are into two parts, that was Swarbhanu. Then it was the mind of Rahu only, na? So it means Rahu is highly intelligent and sharp-minded. बाकी तो दानव डेमन वर नॉट एबल टू गेट इनटू इन बिटवीन द देव्स ना बाकी सब तो फॉलो कर रहे थे रूल्स दिस वाज द डेमन जिसने रूल ब्रेक किया इट मींस वी कैन अंडरस्टैंड नंबर 4 आर द रूल ब्रेकर्स दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इजंट इट ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इजिली अंडरस्टैंडेबल है नंबर 4 अबाउट राहु जैसे राहु क्या होता है हमेशा इल्यूजन उसने क्या किया राहु क्रिएटेड अ इल्यूजन कि आई एम अ देव बट ही वाज अ डेमन so number 4 people knows how to create the illusion but अगर जैसे डेमन के पास इंटेलिजेंस थी शार्प माइंडेडनेस था कैलकुलेशंस था थिंकिंग प्रोसेस था प्रैक्टिकलिटी थी मिस्टीरियसनेस है लेकिन अगर ये अपने सारे क्वालिटीज को इन अ राइट डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं देन दे कैन अचीव हाईएस्ट थिंग्स इन देयर लाइफ दे कैन वर्क इन द हाईएस्ट पोजीशंस दे कैन बी एम्बेसडर्स सो राहु को अपनी क्वालिटीज को अपने ट्रेड्स को इफ दे अंडरस्टैंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली they can achieve a lot of things, success and money in their life. Is this clear? Number 4 is clear. Do we have anyone number 4? Ma'am, my son. So do you resonate with this? He has these qualities, very sharp-minded Yes, and calculative person. yes. How old is he? Yes. He is 22. 22. And very practical. What he Yes, do? he is very practical. But he is unsatisfied, always unsatisfied. Unsatisfied. Yes. Yeah, And those who are born on 22nd, they are, more unsatisfied. अगर yeah. वो 4 या 13th में है तो फिर भी some level of satisfaction is there. But if they are 22nd born, then they are the highly unsatisfied. और Okay. उनके इमोशंस को हैंडल करना इज बिट टफ राइट और वो आईटी में है क्या करते हैं
वो अभी कनाडा में है और वो पढ़ाई खत्म की है, हम्म। बट उसको उसका पीआर नहीं हो रहा, तो इज वेरी दैट के मेरा ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो उसमें ही उसका उलझा हुआ है। वो हो जाएगा। नंबर 4 को वो बाहर ही रहते हैं अधिकतर, आई मीन हम्म। अवे फ्रॉम द पेरेंट्स यूजली। सो वो आईटी सेक्टर में है। नहीं, हम्म। उसने होटल मैनेजमेंट किया है अच्छा। और उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बट हम्म। अभी वो कुछ फाइनेंस वाली कंपनी में जॉब कर रहा है, क्योंकि वहां पे उसको मिला नहीं होटल में जॉब अच्छा। तो ओके। अभी ये इंश्योरेंस कंपनी में जुड़ा है। हम्म। 2 महीना पहले ही हुआ है, बट उसको वो पीआर के लिए ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा परेशान है। But ask him to stick to his job or profession. I mean, what he has studied. क्योंकि हम्म। नंबर 4 के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपने दिस डिससेटिस्फेक्शन और लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कई बार बीच में कॉन्सेप्ट चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, उसको बहुत इस चीज की क्लैरिटी है कि उसको क्या करना है। हम्म। वो क्योंकि अभी उसको वो जॉब करना है बिकॉज 2 and 3 years के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू डू बिजनेस। वो बोलता है राइट। मुझे बिजनेस ही करना है, वो बहुत क्लियर है, तो वो उस पे अपना वर्क उसका चालू है। नहीं तो व्हाई ही डिड दिस होटल मैनेजमेंट, सो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ओनली होटल मैनेजमेंट में ही करना है अपना बिजनेस। आई मीन कोई होटल प्लान कर रहे हैं या रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। वो एक है, लेकिन एक उसका पर्टिकुलर है, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो टैरो रीडर है, तो उन्होंने उसको बताया था कि ये अगर आयन से रिलेटेड कोई भी काम करेगा ना, तो इसको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो वो 2 चीजों पे वर्क कर रहा है, उसमें जो उसका क्लिक हो जाएगा। ऑल राइट। बट बीइंग उसको नंबर 4 फिर होटल मैनेजमेंट क्यों किया? मैम, लेकिन क्योंकि उसको करना था, क्योंकि बचपन से एक्चुअली उसको नेवी और इसमें सब जाना था, बट उसकी लाइफ के साथ कुछ इंसिडेंट्स हो गए, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी फिंगर कट गई, तो वो नेवी नहीं जा नहीं जा सका, सकता। क्रिकेट नहीं जान सका, क्रिकेट नहीं ज्वाइन कर सका। तो इतना ये था कि उसको फिर उसने होटल मैनेजमेंट लिया, ऑल राइट। कि भाई मुझे फिर उसमें क्रूज वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन राइट। उसमें भी उसका नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ फिंगर्स के वजह से ना उसका बहुत इशू था। राइट। उसकी लेफ्ट हैंड की फिंगर नहीं है एक पूरी, ओके। तो वो सब जगह उसको डाउन डाउन होता गया ना, तो वो फिर उसने इसलिए किया था। राइट। जस्ट आस्क हिम टू वर्शिप लॉर्ड गणेश, थिंग विल बी फाइन। ओके, थैंक यू मैम। तो ये क्लियर है? नंबर 4 हाँ, इज क्लियर? yes, dear. बाकी सबको भी क्लियर है? इट्स क्लियर एवरीवन? So if I'll ask the quality of number 1, then what's the quality of number 1? नंबर 1 की क्वालिटीज, बॉर्न लीडर। Right. Number 3, नंबर 3, काउंसलर। counselor. Great. Ex-life Number 2, teacher, counselor. नंबर 2 इज अ क्वीन, Always मदर। ready. mother, full of emotions. Caring people. यस, फुल ऑफ इमोशंस। Issues. Number 4, नंबर 4, Soldiers. सोल्जर्स। number Stars. 4, सोल्जर्स। soldiers. In number system, they are called as soldiers, but they are very sharp-minded, mysterious people, and यस। they are the researchers. They are the reformers. दे डोंट फॉलो दिस सेट पैटर्न्स, अपना ही रास्ता निकालते हैं नंबर 4। हम्म। राइट। Or अपना ma'am, if रास्ता। destiny number is number 4. इफ डेस्टिनी नंबर इज 4, Yes. ओके। बेसिक क्या है? दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक एंड डेस्टिनी बोथ। Basic is 2 and destiny number 4. अब अगेन अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुना बताया था, लाइक अबाउट सन मून राहु एंड केतु, दिस इज दैट कॉम्बिनेशन 2 and 4, right? So there is the impact of eclipse in this combination. Number 2 is an emotional number. Number 4 is a bit cold number. So they have a fight in between. अपने आप में ही एक फाइट चलता रहता है परमानेंट ऑफ डिसीजंस, कि वेदर आई शुड टेक अ दिस पर्टिकुलर डिसीजन और आई शुड टेक अ दिस पर्टिकुलर डिसीजन। खुद में सेल्फ
फाइट चलता है, एक सेल्फ कंफ्यूजन रहता है लाइफ में। इज इट सो? और इसके वजह से लाइफ में डिलेज भी बहुत होते हैं। एक्चुअली मेरी डॉटर है अभी, तो शी इज वेरी स्मॉल, 15 years old. ओके, लेकिन उनका एजुकेशन कैसा चल रहा है? Now she's doing 10th and she's very confused. साइंस लेना है या मैं सोशल सोशल स्टडीज अच्छा है तो सोशल स्टडीज लूं, या आप मतलब आर्ट्स। जो नंबर 2 बेसिक होते हैं ना, उनके लिए लिटरेचर बहुत अच्छा होता है। ओके, तो आर्ट्स वाला फील्ड अच्छा रहेगा, आर्ट्स, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, बिल्कुल साइकोलॉजी, फिलोसफी, बिकॉज 2 and 4 का कॉम्बिनेशन है ना, तो 2 and 4 के कॉम्बिनेशन में दीज थिंग्स वर्क वेल। और हम्म। टीचिंग उनके लिए, बीइंग बेसिक टू टीचिंग इज अ वेरी गुड अच्छा प्रोफेशन लगता है आपको? फॉर तो नंबर नोट्स में 2, कैलकुलेट करके बताऊंगी। स्पेसिफिकली इन दिस साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड लिटरेचर, लाइक इंग्लिश लिटरेचर में अगर वो जाते हैं तो दे कैन डू रियली गुड। ओके, थैंक यू। यस विराज जी। मैम उसका बेसिक नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 8 है, क्योंकि 13 फरवरी 2000 है उसका। हम्म। हम्म। तो ये बेसिकली एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स हैं, 4 and 8 and 8 and 4 का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों की पर्सनालिटी ना एकदम, एक इस तरफ खड़ा है और एक इस तरफ खड़ा है, दे आर लाइक द पोल अपार्ट्स, ओके। राइट, दे आर लाइक द पोल अपार्ट्स, बट बोथ आर से। इस नंबर की, इस कॉम्बिनेशन की एक खासियत है, दे विल अर्न गुड मनी, दे नो हाउ टू अर्न मनी। फोर ओके। एट कॉम्बिनेशन, 8 4 कॉम्बिनेशन, they know how to earn money, they will earn good money. ओके। But yes, as you said, like कि उसको इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए to achieve something. यस। लाइफ में सक्सेस उनको तभी मिलेगा when you they will face the struggles, when they will overcome the struggles in their life. अगर कहीं पे भी हार मान के पीछे बैठ गए तो हम्म। फिर लाइफ विल नॉट टेक ऑफ नहीं करती है उनकी लाइफ, ओके। राइट। एंड दे दीज पीपल, 4 8 वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, एज आई सेड कि गणेश जी का वर्शिप इनके लिए बिग मस्ट है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अपने काम में डिले नहीं करना है, कोई भी काम है, वट एवर इट इज। अगर उन्होंने सोचा है मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, तो हम्म। दे नीड टू वेक अप एट 5 in the morning, ओके। राइट, दे नीड टू वेक अप 5 in the morning। अगर प्रोकास्टिनेशन आता है लाइफ में, इफ देयर इज अ प्रोकास्टिनेशन इन देयर लाइफ, इफ दे वांट टू डिले, इफ दे देयर सेल्फ डिलेइंग देयर थिंग्स, तो वो हम्म। लाइफ में अगर वो एक दिन का डिले कर रहे हैं ना, सो लाइफ विल गिव देम मोर स्ट्रगल, वो चीजें बाय डिफॉल्ट डिले हो जाएंगी उनके लाइफ। ओके। तो अपने किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करना है। ओके। अगर ठीक है। सक्सेस चाहिए तो दे नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड दे नीड टू बी ऑन टाइम, ओके। ठीक है। राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay, let's move on to number 5 and then we'll learn how to prepare the numeroscope. So number 5 is the Prince Mercury, and those who are born on 5th, 14th, 23rd of any month are ruled by Mercury. अब Prince है ये, like our child. Number 5 is the child, Prince. तो King का भी child कौन हुआ? Number 5. Queen का child कौन हुआ? Number 5. So 5 is a number who has a friendly relation with all the 9 numbers, वाह। right? मैम, So 5, yes. मैं इनमें से हर एक चीज में फिट होता हूँ। बट उसका Who वो is नहीं है this? ना। Who is this? ही इज माय स्टूडेंट। All right. सच में मैं इसमें हर एक चीज में फिट होता हूँ। आई एम बट क्यूरियस। आपकी डेट ऑफ बर्थ वो नहीं है ना। या लुक, आई हैव लैक ऑफ फोकस, आई हैव बिजनेस स्किल्स, आई एम अ ट्रैवल फ्रीक, आई एम ओके, क्यूरियस, लॉजिकल, आई एम बट कैलकुलेटिव। योर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट देयर ना। मेरा किसमें है? 17 ना, so it's not there. तो मेरा किसमें है? So it's for number 5, right? They are like the prince in number system. They are like the child. They have this kind of qualities. They have this inner child in their self. They are always curious to know, to understand, to learn, right? जैसे हमारे बच्चे नहीं होते हैं कि
कुछ भी है उसमें, मम्मा दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वेयर वी आर गोइंग, व्हेन वी विल रीच। दे आर दैट काइंड ऑफ, अगर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो आप, तो वो आपसे हर मिनट में पूछेंगे, मम्मा हाउ लॉन्ग, मम्मा व्हाट टाइम विल रीच देयर। लाइक दे आर दैट काइंड ऑफ क्यूरियस kids, very calculative and have a jolly nature. They are highly talented, and the term multi-talented is fit for them. And they know how to manage money, and they have very good business skills. और वो एक inner child, number 5, if miss that inner child, तो they get depressed. किसी भी कारण से अगर नंबर 5 का वो इनर चाइल्ड कहीं मिस हो जाता है, तो दे गेट डिप्रेस्ड. So for number 5 to live with the kids, to stay with the kids, to laugh with the kids, to spend time with the kids is really good. And traveling is another big remedy for number 5. We are talking about number 5. कि अगर आप ट्रैवलिंग भी करते हो तो it gives them a boost of energy. So we can understand number 5 as well कि it's like a child. जो हमारे बच्चे से हमारे बच्चे हैं, वैसा ही नंबर 5 है. बच्चे दादा हो, दादी हो, नानी हो, नाना हो, दे आर फेवरेट टू एवरीवन. बुआ भी, मासी भी, एवरीवेयर दे आर फेवरेट टू एवरी पर्सन. दे आर लाइक दैट. Number 5 is like that. They are favorite to all the 9 numbers. They are good with number 1, they are good with number 2, they are good with number 3, even with the 4. But I'll give you an idea कि 5 4 है तो क्या डिफरेंस आता है. नंबर 8 के साथ भी बहुत अच्छा है, नंबर 9 के साथ भी बहुत अच्छा है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, लाइक गुरु के साथ अब बच्चा बैठा है एंड दे आर शोइंग देयर क्वालिटीज, लाइक आई एम वेरी कैलकुलेटिव, आई एम लॉजिकल, आई एम नॉट सिटिंग एंड स्टडिंग. देन व्हाट विल गुरु डू? Guru will, what will Guru do? We have two teachers here. So क्या करेंगे गुरु नंबर 5 के साथ? Yes, you can unmute yourself. स्ट्रिक्टली डांटते हैं मैम. डांटते हैं उनको, गाइड करने की कोशिश करते गाइड हैं, करने काउंसिल की करने. कोशिश करते हैं. राइट. यस. दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स. गुरु है, नंबर 5 है, तो दे विल ट्राई टू काउंसिल देम. लेकिन नंबर 5 तो वैसा का वैसे ही ना. अब मदर के साथ बच्चे क्या हैं, लाइक इफ 2 and 5 इज देयर, बेस्ट कॉम्बिनेशन. बच्चे जो बोलते हैं मम्मा इज लाइक आई कैन डू दैट टू. अच्छा मम्मा ये कर लूं, ओके गो. मम्मा मुझे ये खाना है, अच्छा आई प्रिपेयर इन द किचन. इजंट इट? मम्माज आर लाइक दैट ओनली. पापाज आर लाइक नहीं नहीं, नो, दिस शुड नॉट बी डन, ऐसे ही होना चाहिए, यू हैव टू स्टडी, बी ऑन टाइम, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस. इजंट इट? तो यही हमारे नंबर्स के रिलेशनशिप भी हैं. अगर आपने इन नंबर्स के रिलेशनशिप्स को समझ लिया, द नंबर कॉम्बिनेशन विल बी इजी फॉर यू. अगर hierarchy of numbers is clear in your mind, then the understanding of planets will be much easier. Right? Now this is clear. Number 5 is clear. So do Ma'am, we have 7 anyone? and 5 combination, how it works, ma'am? 7. 7 is Seven, basics, 5 is destiny. 7 and 5. Right? 7 as like you are a spiritual person, we're highly intuitive, that kind of a person. And number 5 is like jolly, lack of focus, travel freak, calculative, curious. And now this is my guiding force. अब एक बच्चा एक हाईली इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल पर्सन को एक बच्चे की गाइडेंस मिले, तो वो फिर कैसा रिलेशनशिप होगा? तो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप रहेगी, मिसमैनेजमेंट ऑफ डिसीजन विल बी देयर. क्योंकि 7 हैज डिफरेंट नॉलेज, 5 इज लाइक ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड. तो वो अपनी नॉटीनेस, नॉटीनेस विल बी देयर. वो तो वही सिखाएगा, अरे छोड़ो अभी काम नहीं करते, लेट्स मूव ऑन, विल go for traveling, let's enjoy the life. But number 7 is like, no, 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 we cannot do, I have to finish this work, I have to do this, I have to do that. Number 5 will be like, are leave it, work, we have to do the work, all life we have to do this, let's enjoy our life. So there will be contradiction of thoughts. Got it clear? So if you understand the planets,
their relationship with the other planets, then you can easily understand the combinations, right? When we do the advanced course, there we understand all the 81 combinations. Like what is the relation of 1 and 1, 1 and 2? What is the relation of 2 and 5, 2 and 7, 2 and 9? What will be the relation of 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9, whatever. Like from 1 to 9, all the 81 combination we understand in the advanced. But even though if you understand the relationship all 1 to 9 numbers, then you can also understand these combinations easily. Now understand how to prepare the grid. So grid is visible. This is the grid. For 4 and 5, you didn't mention the direction to be checked. All right. For 4, it's southwest. For 4, Southwest. it's southwest. For 5, it's north. Okay. Mother and child combination, one of the good combination, 2 and 5. This is the fixed chart, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2 and 2, 8 and 4 is a fixed grid, right? Please note down this grid, 3, 1, 9, 6, 7, 5 and 2, 8, 4. This is the Vedic grid. There are two type of grid. This is the Vedic grid. This is Vedic grid. Just give me a second, there is something. This gets stuck, so I'm not able to write on the screen right now. So you need to understand, like this is the grid and these numbers are fixed, 3, 1, 9, 6, 7, 5 and 2, 8, 4. Now what you have to do, you have to prepare a blank grid like this, 3 or 3 blank grid. Have you noted down the numbers? No, ma'am. Okay. This is the grid, 319, 675, 284, Done, ma'am. right? Now you need to prepare a 3 into 3 grid like this, right? And you need to note down your date of birth. Write down your date of birth, your own date of birth, and then let me stop this. Let's start a white. Are you able to see the whiteboard? So we need to prepare a 3 into 3 grid, and with that, just keep in mind the numbers in the grid, which is fixed. The placement of number is fixed, like 3, 1, 9, 6, 7 and 5, 2, 8 and 4. For example, like Sundari's date of birth is 6/7/1976, right? Her basic is 7 and destiny is 1, right? So what we have to do? First, let's check
we have 1 in the grid. So where we have to place the 1? It is in the center of the first line. So in this blank grid, where we have to place it? We have to place it in the center, right? Then we have number 6. So we need to check where we have to place 6. In the center line, left corner. So in the blank grid, we can place it in the center line, left corner. Again, we need to check. We have 7. So where is the 7? We have 7 here. So we need to place it in the middle. Then in Vedic grid, in Vedic numerology, we don't place the century numbers. We don't place century numbers. Like if you are born in 19th century, we will not write. Like the young kids, those who are born in the 20th century, we will not write 2. Then we have another 7. So we'll write 7. And then we have 6. So we need to write it here. And again we have 7. The basic is 7. So we need to write down here. And that's 1. So we will write down here. Got it? Where we have to place a number, we need to put that particular number in that box only. Right? Clear? How to prepare the grid? Anyone else like to share their date of birth so that we can prepare the grid? You can write in the chat box. Ma'am, 0809 1984. 08 09 1984. 1984. 1984. Now the basic is 8 and destiny is 3. Right? Now we have a blank grid. In the next class, we'll try to analyze these combinations. Okay? So today you need to prepare the grids. So we have number 8. So we need to place it here. Then we have number 9. We place it here. Then again, we don't place the century numbers. Then we have number 8. We'll have number 4. Then when the basic number or your date is the same number, right? Then we don't place it twice in the grid. Okay? So एक यहाँ पे डेट का 8 है और एक ईयर का 8. In this case, we have put 8 of the date and 1/8 of the year. यहाँ पे we place double it and the destiny number, that's 3. Right? This is how we will get the grid of Gunjan and Sundri ji. Right? This is your grid and this is Gunjan's grid. This is how. मेरा बेसिक भी 3 है, डेस्टिनी भी 3 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ का भी 3 है. तो मैम मेरा 3 tell me. यस मैम 3 जुलाई 1982 है मेरा. 3/7/1982. चलिए आपका भी फटाफट बना देते हैं. बेसिक एंड डेस्टिनी 3. ठीक है. So 3, 7, 19th we will not place. We have 8. We have 2. So the basic and basic number and date is the similar. So we will not write 3 twice. Right? And then destiny is 3.
How to calculate destiny? We need to add all the numbers. So destiny Yes, can ma'am. be different, destiny can be same. So we will place this destiny number in the grid. It means Okay. Aarti's grid will be like 3, 7, 8 and 2. Got it? Okay, ma'am. Thank Clear? So कल हम लोग we Thank will you. understand. In tomorrow class we'll understand other 4 numbers, right? And then we'll understand how to understand the grids, few combinations and name number. How to calculate your name number and the remedies, right? कल की क्लास में हम लोग ये कॉम्बिनेशन कि कैसे ग्रिड को समझना है, कैसे हमें अपने प्रिडिक्शंस पे वर्कआउट करना है. सेकंड, जो बाकी के 4 प्लैनेट्स रह गए हैं अभी 6, 7, 8 and 9, we will work out on that. We'll understand the name number as well, and plus we will work out on the remedies also. कि आप अगर कोई प्लैनेट नहीं है, किसी की एनर्जी चाहिए या यू वांट टू एनहांस योर नंबर, what remedies you have to do, right? So it's 10:42, we need to end the session. तो कल आपसे मिलते हैं इसी टाइम पे 9 o'clock, right मैम everyone? हेलो जी बताइए. मैम, कल क्या मैं मॉर्निंग वाला अटेंड कर सकती हूँ? नहीं, वेबिनार जो होता है हमारा, ये क्लास जो होती है फ्री वाला, वो सिर्फ रात में 9 to 10:30 होती है. ओके, ठीक है. राइट. बाकी जो हमारे क्लासेस, जब हमारे क्लासेस का टाइम सेट हो जाता है, वहां पे वी हैव ऑप्शन ऑफ मॉर्निंग क्लास और लेट नाइट बैच. ओके, क्योंकि ठीक है. जनरली ये जो फ्री क्लासेस होती हैं ये वंस इन अ मंथ ही होती हैं, बट इस बार ये जो क्योंकि कार्तिक मंथ है, दैट इज व्हाई आई हैव डन इट ट्वाइस इन दिस मंथ. ओके मैम. अदरवाइज ये वंस इन अ मंथ ही होती है. ओके मैम. थैंक यू. राइट. Thank you. Thanks, Thank you, ma'am. Thank everyone. you See so you much, tomorrow. ma'am. Thank you Okay. and bye bye. Take Thank you, care, ma'am. everyone. Thank you. Thank Thank you, ma'am. Thank you.